Hello guys. Welcome to Communal. So I am Jayat. Today I will take one session of I will start from the basics and will go till intermediate. And here first I give my brief intro. So I am Jayat. Currently I am pursuing my BTech. I'm in fourth year from Valorant Institute of Technology, and I have been placed in NielsenIQ. So yeah, तो अभी स्टार्ट करते हैं तो अभी व्हाट विल बी द फ्लो इज दैट फर्स्ट हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन. एंड गाइज लेट मेक द सेशन इंटरेक्टिव. सो कोई भी अगर डाउट हो या फिर कुछ मैं पूछूं तो प्लीज चैट बॉक्स में या फिर माइक ऑन करके प्लीज रेस्पॉन्ड. इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके, so let's start our first question. This will be our first question. So first you read the question. पहले पढ़ो. First you understand what the question has been asked. Then I will make it more clear. So let me make you understand the question first. So here it is given that given a non-empty array of integer, in this array every element appears twice except for one. Find that single one. So क्या बोला है कि इधर you will be given an array. Suppose मान लो कि मेरे पास 1 है, 2, 1, 3, 5, then 5 again, then 3. So in this array every element occurred twice. Okay, you can see 1 has been occurred twice, 3 has been occurred twice, 5 has been occurred twice, but except one element which has been occurred once. So how can you find it? Just give a एक बार सोचो कि कैसे कर सकते हैं. कोई भी अप्रोच आए तो प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. Any other respond than Chetan? Okay. Acha. So let make it clear for others also. So what can it be done is that if I start from the basic one, okay, if I start from the basic one, normal लोग अगर normalization क्या करेंगे? First what can we do is that first I will run a loop from 0th index to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th index. Okay, so I'll run a loop from 0th index to 6th index for 0 to 6. My I will go. Okay, and for every I there will be again a j which will check that whether this element is present twice or not. अभी अगर मैं ith पे हूँ तो from I if my j run loops, जब मेरा j loop run होगा तो वो देखेगा कि क्या मेरा 1 फिर से प्रेजेंट है. हाँ है. तो ये बोलेगा कि भाई ये तो है, तो ये तो वो एक्सेप्ट एलिमेंट नहीं हो सकता. तो ये फिर नेक्स्ट आई विल गो हियर. ओके, फिर जे रन लूप करेगा टिल इधर आ जाएगा तो देखेगा कि भाई मेरे को और 2 नहीं मिल रहा. तो दिस विल बी द एक्सेप्ट एलिमेंट. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज दैट आई एम टेकिंग nested for loop. So this is one approach. Okay, if I do this, my time complexity will be O of n square. This is a one approach. Okay, what is the second approach? मेरा second approach क्या है? जिन लोगों को हैशमैप पता है, what hashmap does is that hashmap क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी स्टोर करता है. लाइक फॉर 1, what is the frequency in the array? It is 2. How many times 1 occur? 2 times. What is the frequency for 3? Same, 2. And for 5, same 2. And what is the frequency for 2?
इट इज 1। सो ये मेरा हैश मैप हो गया। तो इससे मैं क्या डिनोट कर सकता हूँ, ये क्या करेगा, एक ही बार लूप रन होगा, वो तो ठीक है, वो ऑफ एन में मेरे को मिल रहा है, इट इज अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बढ़िया है। बट मेरे को एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर लगाना पड़ रहा है, हैश मैप, जो एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से लेता है। तो इफ यू कैन चेक इन द क्वेश्चन, इन द लास्ट लाइन इट इज बीन रिटन दैट you must implement a solution with a linear runtime complexity and use only constant extra space। तो इसका मतलब ये है कि हमें तो वो फैन में करना ही है, साथ ही साथ हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या हुआ, हम हैश मैप भी नहीं कर सकते, ना हम दो फॉर लूप से कर सकते। तो और क्या बचा है, थोड़ा सा लाइक गिव ए थिंक, लाइक व्हाट अदर्स वी कैन डू हियर। Okay, so you can see that in the chat box, Chetan and Shreyan have written that we can use the XOR operation. Now, how can we use that, and like, what is the XOR operation? Okay, see, if you have like little bit knowledge about the bitwise operator, like what is that AND OR operator, you know that what is XOR. Like XOR में क्या होता है, अगर मेरे मेरे पास दो सेम नंबर होता है, लाइक जोर का बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, जीरो जोर जीरो, जिसका वैल्यू क्या आता है जीरो, वन जोर वन, जिसका वैल्यू आता है जीरो, और जीरो जोर वन इज इक्वल टू वन, और वन जोर जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये होता है बेसिक ऑपरेशन। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं कोई सेम नंबर के साथ उसी नंबर का जोड़ करूं तो हमेशा वो क्या देंगे, जीरो। अगर मैं सेम नंबर के साथ कोई एक दूसरे नंबर का, मान लो कि लिखता हूं कि नॉट सेम, ओके, इफ आई जोड़ सेम नंबर विथ नॉट सेम नंबर, it will not give me zero, okay, it will not give me zero, it can give anything, it can give anything। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने क्या बोला कि इस एरे में क्या है, इस एरे में एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शन है, वो बस एक ही बार है, बाकी सारे एलिमेंट दो बार है। अगर मैं बाकी सारे एलिमेंट को कैंसिल कर दूं तो मेरे को ये बच जाएगा, जो सिर्फ एक एलिमेंट बचा है। वो कैसे होगा, लाइक इफ आई टेक द जोर ऑफ एवरी एलिमेंट, वन जोर, वन जोर टू, ठीक है, वन जोर टू, जोर वन, जोर थ्री, जोर फाइव, अगेन जोर फाइव, अगेन जोर थ्री। तो इसमें क्या हो रहा है, वन जोर वन कैंसिल, थ्री जोर थ्री कैंसिल, फाइव जोर फाइव कैंसिल, कैंसिल मीन्स इट विल गिव जीरो। सो मेरे पास क्या बचा है, टू, और इन सबसे बचा है जीरो। सो टू जोर जीरो which will give me zero, as simple as that। तो इसमें क्या कर रहा हूँ कि एक ही बार लूप रन हो रहा है, जो लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, और मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस लेने की जरूरत नहीं पड़ रहा। हैव यू गॉट इट, जस्ट लाइक tell that yes if you got it, if you have any doubt you can ask, I will do the code, but if you just say that whether you have got the approach or not। Okay, so how can we do it, अभी हम लोग कोड करते हो क्या। तो जोर का क्या करेंगे कि मैंने क्या बोला, मैं एक लूप रन करूंगा, दो होगा, जीरो से चलेगा, कब तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ, एरे का नाम क्या है, नम्स, सो नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ओके, सो मैंने क्या बोला, अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूं तो मुझे इधर एक जोर वेरिएबल लेना पड़ेगा, मान लो कि इंट जोर इक्वल टू जीरो। ओके, इंट जोर इक्वल टू जीरो। अभी मैं क्या करूंगा, सबको जोर कर दूंगा, जोर इक्वल टू जोर, फिर जोर ऑपरेटर लगा दिया, फिर दे दूंगा नम्स ऑफ आई। ओके,
लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा। Accepted. Let me give submit. Okay, so it is accepted. If like अभी अगर मैं दो फॉर लूप से करता तो इधर एक्सेप्टेड नहीं होता, उधर दे देता कि लाइक टाइम टाइम एक्सीडेड और टाइम लिमिट एक्सीडेड। ओके, सो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी अगर लाइक साथ साथ कोड करने में थोड़ा वो हो रहा है, लाइक मैं फर्स्ट कर रहा हूँ या फिर बाद में करोगे, तो एटलीस्ट लाइक take the notes of the question number. Okay, today the question which I will do, take at least the notes of that, and you can take the screenshot of the code also, so that you can practice it. Okay, okay, let's move forward. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो तुम्हें बोला है कि एक एरे दिया हुआ है। ओके, और उस एरे में जो नंबर प्रेजेंट होगा वो होगा 0 to n+1। ओके, 0 to n+1। नाउ व्हाट इज द n? n हो गया एरे का साइज। ओके, एरे का साइज। मान लो मेरा n है 4। ओके, तो 0 1, no, like take like this, 0 3 4 2 0 1। तो in this array we have the element from 0 to n+1। no, n+1 नहीं है, n+1 के लिए इधर 5 देना पड़ेगा। ओके, 0 2 1 2 3 4 5 6 7 और इधर हो गया 4। नहीं नहीं ठीक है, सॉरी, 1 2 3 4 5। ओके, सो इसमें क्या बोला गया है, तुम्हें एक एरे दिया हुआ है जिसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो दो बार आया है। ओके, और उस एरे में, लाइक इन दैट एरे, एवरी एलिमेंट विल बी फ्रॉम 0 to n+1। okay, 0 to n+1। now how can you find that element? okay, कोई भी अप्रोच दो, like you can give any approach in the chat box. If the question is not clear, you can ask to like discuss me again. Have you got the question or not? If not, then write like no, so that I can make you understand again. Okay, just a second. Okay, so क्या बोला है कि like this is an array. Okay, this is an array. What is the size of the array? 1 2 3 4 5 6. Size is 6, and it will be 0 1 2 3 4 5. Okay, clear? So okay, let me exclude the 0 part. Okay, let me exclude the 0 part. It will be like more easy for you to understand. Let me make it one based indexing. Okay, let me make it one based indexing. Okay, so this is an array where, see, 1 3 4 2 2. Okay, this is an array. Now if I give the indexing 1 2
3, 4, 5. Okay. So in this array, every element in this array you will find one single element is present which is twice. Okay, you have to find that array. Like there will you have given an array of n plus 1 size. Now how it is n plus 1 size, I am coming later. This is an array in which element is between 1 to n, 1 to n. Okay, you can see that in this array every element is in between 1 to n, 1 to n. Okay, assuming that there is only one duplicate element is present. Now you have to find that duplicate element. How you can find? Okay, you are telling that AND operation. Okay, other suggestion? It's not like that the array will be sorted. Okay, you can see that first one comes, then 3, then 4, then 2, then 2. Okay, so one element will be there which is coming twice, and every other element will be come single time. So you have to tell that which element is coming twice. कौन सा element दो बार आ रहा है वो बोलना है. Chetan has given the approach of AND operation. Any other can think anything? यार चेतन मैं पहले से बोल दे रहा हूँ like AND operation will not work here. First, when you get a question, first you think of the basic approach. Okay, don't go like how the complexity. Yeah, like now Chetan given hash map. That comes very easily in our mind that hash map can work. क्योंकि मेरे को क्या बोला है जब भी कभी भी in any question if there is a concept of frequency हमेशा क्या सोचना है hash map. hash map काम करेगा इधर आराम से. Okay, but और भी solutions है. What in why I will not take the hash map approach? Because hash map will take a extra space or extra data structure I have to use. Okay, but hash map will work here easily. Can anyone think anything extra? You just see that every number is in between 1 to n. There is something in that. Again, let me make it more easy. If I give it zero based indexing also, then will be it work. Then also it will work. You just keep focus to here 1 to n. Every element is present 1 to n, and one element is there which is coming twice. How can you get it? This is a logic building session. Okay, in this way your logic will build, and in this way you can do the DSA problems very easily. These are the questions which will build your like logic. Okay, so let's move forward. How can we do it? पहले मैं एक बार हैश मैप वाला अप्रोच बोल देता हूँ जो अभी चेतन ने like what Chetan has said right now. What Chetan is thinking that if I run a loop from 0 to 4 and जब मैं रन लूप करूँ और मैं स्टोर करता जाऊँ मेरे हैश मैप में जैसे 1. Okay, what is first of all those who don't know hash map, what is hash map? Hash map is a data structure. There is two things. One is its key, another is value. Okay, तो मैं अगर भी मेरा अगर ith index 1 में है तो मैं like I will take that 1 in my key and I will say that first of my count of 1 is 1. Okay, next my index I will go to 3. It will ask to hash map whether 3 is present in the key set or not. क्या 3 अभी key set में है नहीं है तो what can I do? I can insert 3. Okay, insert. So whenever I will insert, I will make my value to 1. Okay, now my index will go forward. In the same way,
my array will ask the hash map whether 4 is present or not. क्या मेरा 4 hash map पे है? नहीं है, तो क्या करूंगा? Just insert it. Okay, insert and make the value to 1. Okay, in the same way my index will go forward, and the same way the 2 will like array will ask to hash map whether 2 is present or not. So 2 है कि नहीं है? नहीं है, तो बस enter करो. Insert कर दिया मैंने 1 के साथ as a value, and my index will move forward, and again array will ask to hash map that whether 2 is present or not. Yes, 2 is already present. तो क्या करूंगा? अगर already present है तो मैं बस value को +1 कर दूंगा. तो what is my value? It will be 2. Then what can I do? मैं अभी हैश मैप पे ट्रेवर्स करूंगा और पूछूंगा कि कौन से वैल्यू में 2 आया है. Like every one will occur single time and only one element will be there which will occur twice. So I will return that 2. Okay. This is a simple method through hash map, but here I am using one extra space. मैं क्या कर रहा हूँ? एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा हूँ. ओके, तो अभी मैं इसको क्या करूंगा? इस अप्रोच को मैं नेग्लेक्ट करूंगा फॉर दिस क्वेश्चन. अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मेन फंड ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट मुझे दिया गया है हर एक टेस्ट केसेस में मेरा जो नंबर्स होगा वो होगा 1 to n. ठीक है, तो जो भी मेरा एलिमेंट होगा जो 2 बार आया या फिर which has came twice, it will be present in the like index number also. Like 2, if 2 came twice, that will be my index number also. Okay, ध्यान से सुनना. Okay, what I am going to say, this is my array, this is my array. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, here it is 1, here it is 3, here it is 4, here it is 4, here it is 4. Okay, my ith index will be here. Okay, ith index will be here. Now what can I do? I will ask here array. अभी जो मेरा एलिमेंट है 0th इंडेक्स पे वो क्या है? वो है 1. ठीक है, अगर ये 1 है तो मैं बोलूंगा तुम 1th इंडेक्स पे जाओ और जाके उधर जो एलिमेंट है उसमें कलर कर दो कि मैं ऑलरेडी विजिटेड हूं, मैं ऑलरेडी विजिटेड हूं. अगर कभी और एक बार कोई एलिमेंट सेम आए उधर कि भाई तू विजिटेड है या नहीं, अगर वो देखे कि मैं विजिटेड हूं तो ये मान लेना कि मैं ही वो एलिमेंट हूं जो 2 बार आया. I know that it is a bit confusing. Just go with me till like last index. It will be very easy. Okay. मैं काम करता हूँ like here. I am again taking 1, 2, 3, 4, 5 so that for now it will be easy. But when I'll code, I will make you understand once again. Okay. See, here it is first. Okay, 1. I will go to the array of array of I. What does it mean? What does it mean? First of all, what is array of I? My I is in the 1th index because it is an 1 based indexing. I know that we always do array from 0. We always work array with 0 based indexing, but this array is 1 based indexing. It starts from the 1. Okay. So what is array of I? It is array of I is 1. Okay. Now what is array of 1? Now I will go to what is array of 1. Array of 1 is again 1. So what I will make it in array of 1, I will give -1 into the element present. Okay, and I will make I plus plus. Now I have gone to here. Now what is my array of I? First of all, what is my I? My I is 2. My I is 2. Okay, now what is array of 2? Array of 2 is 3. Array of 2 is 3. Now what is this array of 3? What is this array of 3? Array of 3 is 4. So what I will do? -1 into array of I. Okay, this will be my formula. See again. Okay, what I have told,
my I is here. So what is I is 2, array of 2 is 3, and I will go to 3 and say that, hey array of 3, you are already visited, so just mark yourself that you are visited. Okay, so I am marking it as visited by how? By multiplying with -1. So it is visited. Okay, now again my I will go in, my I will be incremented and it will go here. So what is array of 3? What is now what is my I? My I is 3. My I is 3. Now what is array of 3? It is -4. But I know that every element between 1 to n, so I will, if I will take the mod value. Always I'll take the mod value. So what it will be? Mod array of like it will be 4 because it came 4. Now I'll go to the array of 4. Array of 4. Array of 4. And I have checked whether it is visited or not. It is not visited. How I am being sure? कैसे मैं sure हूँ? क्योंकि उधर minus से कुछ multiplication नहीं है. It is a positive integer, so it is not being visited. So what can I do? I just make it visited by multiplying with minus. Okay. Now my I gone forward, and I have told to minus. I have told that what is array of 4? It will say that array of 4 is 2. Array of 4 is 2. Now my value is, this value is 2. Okay, now what is whole, like what is the value of the whole, like array of 2? Now array of 2 is, I have to come here, it is 3, and I have to check whether it is visited or not. It is not visited. How can I sure? Because there is no multiplication with negative. So what can I do? I just make it visited, and my I will go, sorry, my I will go forward. Now see. Okay, now see, it is again my I is 5. My I is 5. So here it will be 5. So what is array of 5? It is 2. So it is again 2, and I have gone to 2. It is already visited because it is a negative number. So I can say that my 2 is the one element which I want. It is little bit confusing. First of all, say that you have got 70% also. You have got or not, like 70% at least. If not, I will make you understand again. Have you got? Okay, just I'm going to code it. While I will code, you will, while I will code, you will get the rest of the part. Okay, let me code. I think the name of the question is, yeah, see, the question is, given an array of integers containing n plus 1 integers, where each integer is in the range of 1 to n. As I told here, every integer is in between 1 to n. Okay, there is only one repeated number in the array. Return that repeated number. So in our scenario here, the 2 was the repeated number. Okay, so, and also here it is being told that we should only use the constant extra space. It means that we cannot use any other data structure like hash map. Okay, and also we cannot modify the array. Okay, okay, can anyone say why this line has been asked, that why without modifying the array? If we can modify the array, what was the solution? Can anyone tell? Okay, let me tell you. We can do this question by sorting also. If I does just if I sort the array like 1 2 2 3 4 and run the loop, like the number which is present in the array of I and array of I minus 1 is same, just return it. Okay, in this way, by modifying the array we can get the answer. But here it is being told that without modifying the array हमें return करना है कि कौन सा number repeated है. Okay, तो
Let's do the code here. Okay, so let's do the code here. मेरे को क्या दिया हुआ है? I have to first I know that every number is between 1 to n, तो मेरे को पहले n पता होना चाहिए, और n क्या है? N is the size of the array. So in n is equal to nums dot length. मेरे को क्या हो? मेरे को n मिल गया. Okay, I have got the n. Now just run a loop. Int I equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, and you have to check whether already the number is visited or not. How can I check that whether the already that particular index element is visited or not? It is very easy. I have to check that whether that number is negative or not. Okay, how can I check? If nums of I, okay, nums of I is less than 0, it means that it is already visited. So I have to return from here only that I have got my required number. मुझे मेरा twice वाला number मिल गया. So I have to return I have to return nums of I. Okay, nums of I. But I know that if that number is less than 0, it means that this number is also, it might be less than 0 somewhere. Okay, तो इसमें अगर एरे में मैं कभी अगर ऐसे करूं कि इंडेक्स नंबर पे मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो इट माइट गिव लाइक something error should be given. Okay, out of bound or something, because array of -1, array of -2, it can't be possible. I cannot be negative. So for that reason I have to use math.abs, absolute value. Okay, how I have to give here absolute value? In Java we write like this, math.abs. Just copying it for this. Okay, so what I've done, I have got the required element if my number is already visited. Now if not visited, what I have to do? If not visited, just I have to check nums of math.apps nums of I, nums of math.apps nums of I is equal to, how can I make it visited? By just multiplying with -1. -1 into nums of math.abs nums of I. Okay, got it or not? Yes, into semicolon, I think it is correct. Bracket is 1 2 3. Yeah, so let me run the code. Okay, first I have to I have to give the return statement. I know that my answer I will get from here only, but फिर भी मेरे को एक return statement देना पड़ेगा, क्योंकि here it is the int. In Java I have to give a return statement. So let me return 0. कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा जो 13th नंबर लाइन पे आना पड़े. पहले से कोड कंपाइल जब होगा तो इधर से मेरे को आंसर मिल जाएगा. Accepted. Let me submit it. Yeah, so it is accepted. Okay, just you check the code you have got or not. It's a very, like, what to say, it's an important also, and also it's the best question to build the logic. These type of questions are best questions. You can see the number of likes in this question, 17.5 thousand.
You got it? मैं और एक बार रन कर देता हूँ, इसमें क्या क्या हो रहा है. If I want that particular index or element, sorry, if I want that particular element, I have to just make it visited. पहले मुझे विजिटेड करना है सारे एलिमेंट को. अगर फिर से उसी विजिटेड वाले इंडेक्स में मैं फिर से दोबारा जा रहा हूं, लाइक अगेन इफ आई हैव टू गो, इट मींस दैट दिस इज द रिक्वायर्ड index number, or that index number is my element. Okay, that index number only is this index number only my element here, required element. So in this way I can get it. Okay, एक बार like you need to dry run in your copy this code, just take a screenshot and you will get it. Okay, now as I've covered these questions, okay, let me go to one data structure known as heap or priority queue. In that data structure I can solve one question for you. Okay, okay, chalo. How many of you know like what is priority queue? I think many are there who are all like beginner. So let me give a brief intro about the priority queue. What is priority queue or the heap? Okay. यार heap क्या होता है? मान लो heap एक data structure है. heap एक ऐसा data structure है. इसमें दो चीज कर सकते हैं. इसमें दो चीज होता है. एक होता है main heap. ओके, इसमें main heap भी होता है और max heap भी होता है. ठीक है, main heap भी होता है और max heap भी होता है. मान लो मिनिम क्या करता है, व्हाट मिनिम डू इज दैट, कोई भी नंबर अगर मैं इसमें डालू ना, कोई भी नंबर डालू लाइक 1 5 3 2 0, जो मेरा एकदम ऊपर द टॉप ऑफ द एलिमेंट विल बी द like most smallest number or the minimum number, that will be 0, and the order of the rest of the element can't be able to say. It will be not like that 0 1 2 3 5. It is not like that. It is like it is being sure that the top of the element will be 0 and the order of the rest of the element can be anything. It can be 2 5 1 3. It can be 3 2 1 5. Okay, this is the example of mean heap. In the same way, max heap क्या करता है, जो top of the element होगा, what will be the top of the element? 5 होगा, and the rest of the element can be, the order of the rest of the element can be anything. Okay, got it or not? Like what is the what is the most important or the basic concept of the priority queue? Just write the yes if you got it. What is the concept? Then I'll move forward for a question. Okay, I think everybody is enjoying this session. Okay, so if you don't able to like get it or like पूछ लो यार, डाउट पूछ लो. So my question is, you have given an array, like the, let be the array is क्या लो 5 1 2. Okay, so let you have taken the array is 1 3 4 1 3 4 2 2 6 5 3. Okay, so 0 1 2 3 4 5 6. So the what is the size of the array? N is equal to 7. You have the 7 element and you have to find the third, no not third, take it more so that you can understand. Take fifth. Okay, so take fourth. Okay, you have to find the fourth greatest element.
or the fourth largest element. Okay, fourth largest element. Fourth largest element. Whenever you get the question in your like in the Leetcode or anywhere you you practice, if you get the question in this way, like find the kth number or the kth greatest number or the lowest number, just give a thought about the heap or the priority queue. This will be the best data structure to use in that question, because in this question the main question is that find the kth largest number and the k is given as a 4. if I don't go inside of the code, अगर मुझे ऊपर ऊपर से बोलना है कि कौन सा मेरा फिफ्थ लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट नंबर होगा, तो वो कौन सा है? Can anyone say what is the fourth largest number from these numbers, from these elements? What is the fourth largest element? What is the largest element? Which one is the largest element? Largest one element is 6. And what is the fourth largest element? Just to say that which one is the fourth largest one, okay? The numbers are 1, 3, 4, 2, 6, 5, 3. Which one is the fourth largest one? My first largest one is 6. My second largest one is 5. Third largest one, it will be 4. And the fourth largest one, it will be 3. So the answer should comes 3. Okay? Yes, Natasha. So answer should come 3. Now let's see how can I do this. एक ट्रिक बता रहा हूं मैं. कभी भी अगर kth largest बोला जाता है, kth largest, so always think about or always use mean heap. और इसी क्वेश्चन को अगर बोले कि kth smallest बताने के लिए, ओके, kth smallest बताने के लिए always use max heap. ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें? मीन हीप, क्योंकि मुझे बताना है कौन सा kth लार्जेस्ट एलिमेंट है, which one is the fourth largest element. Now let's see how can I do. मैंने क्या बोला? एक हीप क्या होता है? हीप होता है एक ऐसे बकेट होगा जिसके टॉप में मेरे को मेरा रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा. ओके, अच्छा, बिफोर कमिंग टू द हीप पार्ट, can anyone tell how can I do the like this question in any other way? Why should I prefer heap? I will tell that part, but why, like, except heap, what can other thing we can do? I have to find the fourth largest one. Okay, I have to find the fourth largest one. What other thing can do? Always give it, like, always you should know that largest, smallest, anything, these type of questions you have to first sort the array. Okay, if you don't use any priority queue data structure except this data structure, you have to sort an array. Yeah, sort the array. That Chetan has given the answer. You have to sort the array. So when we sort the array, the answer will come 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Now if I run the loop from my back side, because I need the largest one, this one will be the largest one. So if I run the loop, I'll get my first largest, second largest, third largest, fourth largest. Okay, so I'll get my answer. Okay, but in the same way, if I use the priority queue, because in this question it can be done through a sorting, and we can know those who know the time complexity, and though for them I am telling, and those who don't know about the time complexity, just learn that what is time complexity from the YouTube, because it is the most important one to do the questions. In many times you can see when you submit a question, TLE, it gives TLE, which is time limit exceeded. It means that your code is not optimized. तो हमें ऑप्टिमाइज करने के लिए ऐसे डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो इसमें अगर मैं सॉर्टिंग कर रहा हूं, तो सॉर्टिंग करने के बाद मेरे को
क्या करना है, इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को लग रहा है वो लग रहा है O ऑफ n log n। और अगर मैं प्रायोरिटी क्यू यूज करता हूं तो उसमें मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है O ऑफ n, which is much better than O of n log n. So in this question I have, or I like have not, it does not mean I have to use, but if I use this priority queue it will be the best one. Now see how can I use that priority queue part. मैंने क्या बोला है, अगर मेरे को लार्जेस्ट दिया हुआ है तो मेरे को मीन हीप यूज करना है, अगर मेरे को स्मॉलेस्ट बताना है तो मेरे को मैक्स हीप यूज करना है। तो मेरे को इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट दिया तो मैं यूज कर रहा हूँ एक मीन हीप, एक मीन हीप। मैं ट्रेवर्स करूंगा, let me rub the unnecessary part, and my k is equal to 4, fourth largest, okay, yeah। तो मेरा I अभी इधर है, I have to run a loop, so I as I am I have taken the mean heap, so मैं क्या बोलूंगा कि भाई वन तू चेक कर, like you have to insert, okay, I have to insert the one first, I have inserted one, okay, just a second, yeah, so I have inserted the one. Now let's go forward. When 3 came, when 3 came, I will also insert 3. I will also insert 3. But I know that as it is a mean heap, one will go in the top of the heap because it is a mean heap. मैंने क्या बोला था, जो मेरा एकदम ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो सबसे मिनिमम होगा. So between 1 and 3, which will be the minimum? 1. So my 1 will go to the top, and next it will come, next it will come 3. Okay, now my arrow will go to 4. Okay, now 4, अब 4 आया, क्या मेरा 4 टॉप वाले से छोटा है या बड़ा है? ऑब्वियसली टॉप में 1 है, 4 is greater than 1, so 4 will not replace the top part, 4 will come to the down part. Okay, 4 will come to the down, again go, now come 2, अब क्या आया 2, जब 2 आया क्या मेरा 2 1 से छोटा है या larger है? Obviously it is greater, so 2 is also, it will come to down, now it will go to 6. Now see, okay, अब देखो अभी मेरा प्रायोरिटी क्यू का साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ माय मीन हीप, इट इज ऑलरेडी बीइंग 4, एज आई नो मेरे को क्या बोला है फोर्थ हाईएस्ट बताने के लिए, फोर्थ लार्जेस्ट बताने के लिए, तो इसका मतलब है मेरे को जो मेरा साइज होगा डेटा स्ट्रक्चर का उसको 4 से ज्यादा मैं अगर इंक्रीज करूंगा तो मेरा ये फोर्थ वाला तो निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को टॉप में फोर्थ लार्जेस्ट नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं जब 6 को एंटर करूंगा, इससे पहले 6 को एंटर करने से पहले मेरा अभी ऊपर जो है उसको मैं हटा दूंगा। इसका मतलब यह है कि ये 1 कभी भी मेरा फोर्थ लार्जेस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मेरे हीप के अंदर 3 एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है जो इससे लार्जर है, एंड अभी जो आएगा, अभी जो आएगा वो उससे छोटा है, तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 तो मेरा कभी भी फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। तो व्हाट आई विल डू व्हेन एवर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, the I will always take the size of the priority queue as a k size। तो मेरा भी फिक्स साइज है प्रायोरिटी क्यू का कि जब भी मेरा प्रायोरिटी क्यू का साइज 4 हो जाएगा तो अभी मैं ऊपर वाले को हटा दूंगा, लेट मी रिमूव फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू एंड देन आई विल एंटर द 6। ओके, देन आई विल एंटर द 6। अब देखो इस प्रायोरिटी क्यू जब अपने आप को like when it will solve the 2 will move forward, 2 will move to the top, मेरा 2 आ जाएगा एकदम टॉप में, ठीक है, 2 आ जाएगा एकदम टॉप, यस और नो? 2, क्योंकि मेरे को जो मिनिमम है अभी उसमें से जो एकदम मिनिमम है वो टॉप में आएगा, ठीक है, सही बात है, लेट गो फॉरवर्ड, नाउ कम 5।
अभी आया क्या 5? तो इसका मतलब ये है ऑलरेडी मेरा साइज ऑफ हीप इज 4, so I need to enter 5. If I need to like enter the 5 in the heap, I have to like delete the 2 or I have to remove the 2. चलो 2 को रिमूव किया, 5 को इंसर्ट किया। इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है? 3, तो इट विल बी फॉरवर्ड वन, इट विल बी दिस टॉप वन। नाउ मूव इंक्रीज टू द 3। okay, it is already 3, 4 element is present and again I have to enter something. Okay, again I have to enter something. It means that I can remove it. Okay, I can remove it, or as it is an equal element I can remove it or cannot be, just take in this sense only that I have to remove it. Okay, so चलो 3 को remove कर रहा हूँ और इस 3 को enter कर रहा हूँ। Now what is my top element? The element which has been present in the top, it is the fourth largest one. Okay, have you got it or not? Sorry yaar, sorry, I am on mute. Okay, just a second. Have you got till this? If have you got the code till this? Like first I have taken one priority queue, then I have taken one for loop where I am inserting the array element in the priority queue. Have you got till this? I'm sorry that I was on mute. Okay, okay. Those who have not got this approach, I am taking one another minute to
मेक यू अंडरस्टैंड वन अनदर थिंग टू गेट यू मोर क्लियर, ओके। और एक अप्रोच ले रहा हूं मैं इसी का, बट वो ना और एक आसान, मतलब कुछ ज्यादा ही आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। इसमें क्या कर सकते हैं, एक प्रायोरिटी क्यू ले लो, ठीक है। साइज का चक्कर मैं बाद में देखूंगा, पहले क्या करूंगा, इन सारे एलिमेंट को मैं प्रायोरिटी क्यू में ले लूंगा, ओके। वो भी एक मीन हिप में ले लूंगा। तो कैसा आएगा, वन, ऊपर तो वन आएगा क्योंकि मैंने क्या बोला, जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और बाकी कोई भी ऑर्डर में रह सकता है। जैसे मान लो कि, अच्छा फिलहाल मैं अभी ऑर्डर में ही लेता हूँ, ठीक है, वो आगे काम आएगा। वन टू थ्री, थ्री, 4, 5, 6, ठीक है। मान लो ये मेरा, मैंने सबको इंसर्ट कर दिया। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हो गया मेरा स्टेप वन। मैं क्या करूंगा, स्टेप वन में सबको मैंने इंसर्ट कर दिया। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं बोलूंगा, जितना मैं एक व्हाइल लूप लूंगा और मैं बोलूंगा जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन के है, तब तक क्या करो, ऊपर से रिमूव करते जाओ। अभी मेरा साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइज है, बट मेरे को क्या चाहिए, 7 इज ग्रेटर देन के विच इज 4। अब देखो क्या करना है, इसको मैं रिमूव करूंगा। जैसे मैं 1 को रिमूव किया, मेरा साइज हो जाएगा 6, अभी भी ग्रेटर है। मैं 2 को रिमूव किया, मेरा साइज हो जाएगा 5, अभी भी ग्रेटर है। मैंने 3 को रिमूव किया, साइज हो जाएगा 4, अब ग्रेटर नहीं, अब इक्वल है। इसका मतलब मेरे को अभी जो मेरा टॉप एलिमेंट है वो मेरा रिक्वायर्ड एलिमेंट है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज सबको इंसर्ट कर लो प्रायोरिटी क्यू में। सेकंड स्टेप इज व्हाइल माय साइज इज less than or my size is greater than my k, just remove from the top, okay। Now you got it or not, just write yes or no. I think this is more easy, okay. In this way you can do the, I have done the maximum largest one. If the question asked is this, अगर क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि k स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए, तो जस्ट टेक द मैक्स प्रायोरिटी क्यू। तो मेरा बस एरे को मतलब उल्टा हो जाएगा, 6 5 4 3 3 2 1, ओके। ऊपर से हटाना होगा। तो लेट्स फर्स्ट पुट द कोड इट, ओके। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप कर दिया। ये क्या था मेरा, ये था मेरा फर्स्ट स्टेप, जस्ट इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द प्रायोरिटी क्यू। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, जब तक pq डॉट साइज, जो मेरा प्रायोरिटी क्यू है उसका साइज अगर ग्रेटर देन k है, क्या करूंगा, pq डॉट रिमूव। हमेशा प्रायोरिटी क्यू में रिमूव होता है ऊपर वाला एलिमेंट, ओके। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, जस्ट रिटर्न कर दूंगा pq डॉट ऊपर वाला एलिमेंट। ऊपर वाले एलिमेंट को मैं एज ए पीक भी बोल सकता हूँ, pq डॉट पीक, और pq डॉट पोल। पोल करने से क्या होगा, जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो मुझे लाइक एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट ना लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंट आंसर, जो मेरा आंसर है वो है pq डॉट पोल। इसका मतलब है मैं ऊपर वाले एलिमेंट को पीक भी किया प्लस रिमूव भी किया, रिमूव करके आंसर में स्टोर किया, और जस्ट रिटर्न आंसर, ओके। Accepted, just submit it. And it is being accepted, okay. So this is the code here, you just take a screenshot. This is kth largest element. If you come down and give the similar question, you will find the many question in this way. Top k frequent element, third maximum number, kth largest element, k closest points to the stream, all these are very important. बस इस कोड से तुम इन सारे कोड को सॉल्व कर सकते हो, लाइक यू हैव टू चेंज लिटिल बिट इन द बिटवीन, ओके। फॉर मैं और एक बात बोल रहा हूँ, जो लोग जावा में कर रहे हो, एक्चुअली मुझे सी प्लस प्लस का ये नहीं पता है कि एक बार गूगल में देख लेना है कौन सा लेता है प्रायोरिटी क्यू में। अगर तुम जावा में कोड कर रहे हो, अगर तुम्हें ये हो गया तुम्हारा मीन हीप, ओके, ये हो गया तुम्हारा मीन हीप। अगर तुम्हें मैक्स हिप करना है, अगर तुम्हें मैक्स हिप का इनिशियलाइजेशन करना है, तो बस एकदम सेम लिखना है, एकदम सेम लिखना है,
और सेम लिख के इसमें आके बस ये देना है कलेक्शन कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब ये मैक्सिप हो गया। ठीक है, ये हो गया थोड़ा जावा में मैक्सिप करने का, तो बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। Have you got it or not, or how is the session? Okay, I think I have already exceeded the time. तो कोई भी डाउट है अगर पूछ लो, नहीं तो बट आई हैव एंजॉयड मच दिस सेशन। ओके, थैंक यू रेवती। Okay guys, so thank you. And thanks to Anshuman also. Like he has asked me to give this wonderful session, and I have enjoyed it. Thanks to Anshuman, thanks to Camille. Okay guys, so I'm leaving here. Thank you.